ઉમ્મીદ છોડી દે ત્યાં કરુણાલય કેન્દ્ર એમનો હાથ પકડે છે। તો આજે તમે અને હું એક નિમિત્ત બની અને આ વિડીયો વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરીए। कैंसर के कौन से स्टेज पे है? चौथी स्टेज पे है। चौथे महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र से आए। रत्नागिरी जिले से। ओके, और यहाँ पे आपको सब फ्री में सेवा मिल एकदम रही है? फ्री में सेवा मिल रही है। मैं भी उनके साथ में, उनको भी, मुझे भी खाना पीना आपको सब भी फ्री में मिल रहा फ्री है? में मिल रहा है, सब फ्री में मिल रहा है। ओके, तो जो ऑलरेडी कैंसर में अभी जूझ रहे हैं, हाँ, जो उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको यहाँ यहाँ आना चाहिए। यहाँ बहुत सुविधाएं है, दवाई अच्छी मिलती है, डॉक्टर विक्टर सब चेक करते हैं, दवाई देते हैं, तो फिर उनको दुखाव कम हो जाता है। કરુણાલય એટલે પેશન્ટોનું બીજું ઘર, પણ જ્યારે ડૉક્ટરે એમની ઉમ્મીદ છોડી દીધી હોય, સારવાર આપીએ છીએ એનાથી એ લોકોને જીવવાની ઉમ્મીદ આવે છે, કારણ કે અમે રાહતની સારવાર આપીએ, જેવી કે દુખાવો મટી જાય, ઊંઘ આવે, ખોરાક ખાઈ શકે, બેઝિક એ થાય, બાથરૂમની નળી કરીએ, નાકની નળી કરી આપીએ, પેટમાંથી પાણી કાઢી આપીએ, આ બધી જ સારવાર ફ્રી છે, સાથે સગાને પણ રહેવાનું